So this is going to be the third video for reading comprehension LegaLift की तरफ से, और मेरा नाम प्रियांशु है, आप मुझे प्रियांशु भी कह सकते हैं। इस वीडियो में हम 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। पिछली वीडियो हमने 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया इंग्लिश का, और हमने बताया कि वो कैब कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो 2024 में तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं था, बट 2023 में आपको दिखेगा एंड आपको एक सही लेवल मिलेगा कि 2025 का पेपर कैसा आ सकता है। देयर इज़ मोर चांस दैट इट विल कम लाइक 2023 का पेपर rather than 2024 का पेपर। सो दिस इज़ गोइंग टू बी this is the logo of LegaLift essentially, and this is NALSAR हैदराबाद का कैंपस का फ्रंट गेट। So in this video we are going to cover up the question paper of 2023 as well as do some vocab and some doubts that you can have and some mistakes you can make in the paper, and we will also see how CLAT's answer can be sometimes subjective and sometimes answer key can be wrong, and one question out of these 30 questions is actually wrong, like clearly wrong. I don't know if they changed that in the final answer key, but the answer key I'm using is the final answer key, so most probably they did not, but that answer is wrong. Okay, so this is the first passage. अब start करो इसे. Okay, I'm expecting you have finished the passage. So this passage is about a girl in small town of Kalimpong. I would guess it's in northeast, but I'm not too sure. But वो कैसे मतलब अपना जो एरिया है उसमें बुक्स आने में बहुत दिक्कत होती है एंड इट टेक्स टाइम. इट्स प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, प्री लिबरलाइजेशन इंडिया, आई एम सॉरी अबाउट दैट. तो 1990 से पहले की बात है, तो बुक्स आने में टाइम लगता था, और ऑब्वियसली प्रेस का उतना यूज़ बढ़ा नहीं था. इंटरनेट एज अभी आई नहीं थी, रिवोल्यूशन हुआ नहीं था. उसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस भी अभी काफ़ी मतलब स्टार्टिंग फेसेस में था. उस टाइम की बात है कि उसको बुक्स लेने में कितना टाइम मिलता था, कबाड़ी वाले से वो कैसे लेती थी एंड ऑल दैट. तो चलो हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं, उसके बाद वापस इस पे आएंगे. तो ये प्रोविजनल रीडर से लिया गया है, एक्सट्रैक्टेड विद एडिट्स बाई सुमन रॉय ने लिखा है, लॉस एंजल्स रिव्यू ऑफ बुक्स. ठीक. वाट यूज़ वॉज कबाड़ी वाला वेस्ट स्पीकर टू द ऑथर. वेयर कबाड़ी वाला क्या यूज़ था, तो इधर देखो. चलो पहले एलिमिनेशन करके देखते हैं कितना एलिमिनेट हो सकता है ईजिली. तो कबाड़ी वाला बॉट अ पॉलर है मैगजीन. इसमें ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, ये लेती थी मैगज़ीन उससे, क्योंकि कबाड़ी वाले के पास बहुत सारे मैगज़ीन्स होती थी और इसको पढ़ने के लिए चीज़ें मिलती नहीं थी. सो पहला वाला गलत है, ए इज़ रॉन्ग. कबाड़ी वाला स्टॉक ऑफ बुक्स एंड मैगजीन वेयर ऑफ इंटरेस्ट टू द ऑथर. दिस कैन बी द आंसर. कबाड़ी वाला वाज अबाउट टू स्टील द ऑथर्स मैगजीन. नो. ऑथर ऑर्डर्ड बुक्स ऑनलाइन, विच वाज ऑनलाइन तो कुछ सिस्टम था ही नहीं. तो बी इज़ द आंसर ऑफ दिस. एंड कबाड़ी वाला इवन गेव हर द मैगजीन्स फॉर फ्री समटाइम्स if his business was going well. Okay, so what according to the author is essential about the experience of being provisional reader. तो प्रोविजनल रीडर होने का सबसे ज़्यादा मतलब एसेंशियल एक्सपीरियंस क्या है. ओवर ईगरनेस. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज इट इज़ क्लियरली स्टेटेड हियर समवेयर दैट birth of we accept is introduced two categories of people who stopped reading after school and those who attaches to the reading thriller. तो कुछ लोग थे जिन्होंने छोड़ दिया था पढ़ना. तो ओवर ईगरनेस वुड नॉट बी द राइट वर्ड. शी वॉज ओवर ईगर, शी वॉज एक्साइटेड, बट नॉट ऑल पीपल वेयर. वेट अ मिनट. उसके बाद एक्सक्यूज मी. ओके, स्टार्ट. अदर देन दैट, रिलेटेडनेस इन द सेंस ऑफ कमिंग लेट फॉर एवरीथिंग. लाइक फॉर एवरीथिंग इट इज़ ए बिट टू मच इंटरप्रेट कर सकते हो आप इसको प्रोविजनल रीडर के लिए. मतलब एवरीथिंग बुक्स, इसमें तो एवरीथिंग डायरेक्टली लिखा है, तो उस वजह से ये ऑप्शन भी काफ़ी वेग है. अगर थर्ड ऑप्शन बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही नेगेटिव है तो आप फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जा सकते हो. एक्सेप्टिंग अ टेम्परल गैप बिटवीन वाट वॉज करेंट इन द वाइडर वर्ल्ड एंड द टाइम एट विच दिस अराइव्ड इन द प्रोविंशियल लोकेशन. दिस इज़ मोर डिटेल्ड आंसर एंड इट इज़ एक्चुअली द एसेंस ऑफ व्हाट सी वॉज एक्सपीरियंसिंग. तो इसका आंसर सी है. उसके बाद थर्ड, वाई डिड द ऑथर फील ए सेंस ऑफ एपिफेनी एंड डीप सैडनेस. क्यों, क्या रीज़न था उसका कि ये सैड हो गई थी एंड शी वॉज नॉट वेरी पॉजिटिव. Because the things that felt special and unique to the author were already established and accepted through in the wider world. इसमें इस excerpt में इसमें लिखा गया है, there is one experience that even his professor told that he made a PhD thesis and after he read C.W. Biggs's work he realized that his work was not original and already people had done it in the mainstream. So this is the reason, option A, because things that felt special and unique to the author were already established and accepted thought in the wider world. जब आप कुछ सोच के ओरिजिनल काम करो और आपको पता चले कि आपकी डिस्कवरी थी नहीं,
In a funny way, she also told that she met many would-be Newtons. And that's very much correct in a way. Because the author was because the author is big in city. No, so A is the answer in this. What does anachronistic? This is the first question where vocab is important. You can actually eliminate this. Anachronistic इधर use हो रहा है. Either somewhere it is being anachronistic discovery. उसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि समथिंग दैट इज़ नॉट प्रेजेंट, मतलब इस टाइम में वो फिट नहीं बैठ रही, पुरानी टाइम की चीज़ है. तो यूज्ड इन द पैसेज में किस तरह से यूज़ हुआ है ये पूछा गया है, नॉट द जनरल मीनिंग. रूटेड इन नॉन अर्बन सेटिंग, उसकी बात ही नहीं हुई. रिलेटेड टू मोफोशियल एरिया, मोफोशियल एरिया, दिस इज नॉट द आंसर. अपोज टू प्रिवेलिंग सेंसिबिलिटीज, no, this is not the answer. Connected with another time, this is the direct meaning of this anachronistic. इसका आंसर ये है कि समथिंग दैट दे डिस्कवर्ड वर नॉट प्रेजेंट, मतलब पहले ही एक जगह पे हो गई थी. लाइक शी हैज़ ऑलरेडी टोल्ड टेक्नोलॉजीज विच आर प्रेजेंट इन द मेन स्ट्रीम और अदर कंट्रीज आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, एंड दैट वाज वाई लिबरलाइजेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर नेशन एज वेल. क्योंकि लिबरलाइजेशन के बाद कई चीज़ें जो हमारे देश में नहीं आती थी या जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी वो आ गई ईजिली. नहीं तो पहले कंप्यूटर, लैपटॉप, वो सब बहुत मतलब लंबा प्रोसेस था कैसे लाओगे. अब तो कंपनीज आके सेल कर सकती है एंड अवर मार्केट्स आर ओपन. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस. नहीं तो पहले इन्फॉर्मेशन भी स्लो थी, ऑनलाइन इंटरनेट वाज नॉट दैट डे एंड एज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द डे एंड एज वी लिव इन. सो एंड इट्स नॉट टू फार बैक, इट्स लाइक 1990s. इट्स जस्ट लाइक 30 साल पहले की बात हो रही है ऑलमोस्ट, तो ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है. So, which of the following options captures the meaning of the last sentence best? Let's see the last sentence. What rescues it is the unpredictability of the randomness and haphazardness involved in mapping connections among thoughts and ideas and a way that hasn't been professionalized. So, she is essentially telling कि कुछ originality भी है, क्योंकि इसको पहले से नहीं पता. She does not know already कि ये चीज़ें discover हो चुकी है. So, she in herself has some originality in these things. Yes, among mapping connection among thoughts and ideas. So that is what she's trying to say here. So the author feels student, no, this is totally wrong. So the author feels dating as access to intellectual idea. Her lack of metropolitan sophistication lets her engage with the ideas with some originality. This is the most genuine answer, I think. B. So the author is aware of the limitedness of her knowledge. She is confident, can hold her own in a crowd. She also proud of her roots in the small town. So B is the answer in this. I think we are clear on that. This passage was, I would say, reasonably easy, not very hard. If you can go wrong in some question, I would say 2 can be a question that you can go wrong in. You can confuse between A or C. Or if you don't know the vocab, obviously you might confuse this answer, and if you eliminate it, you will get the answer. So this was a relatively easy passage compared to what can come as such. So let's go with the second passage. You can read it. So I hope you have read it. Okay, so this is about excavation in Kiladi in Tamil Nadu. And what were the findings, and it broke some assumptions or thinking or thought of thinking at that point, that first the civilization happened in the north and in the Indus Valley Gangetic Plain, then it happened in the southern part of India. But this actually sources that before even we expected, there was reading and writing was present there. And the last statement actually explains it. Fight going on here is, you are not the one to teach me, I have learned it myself. कि राइटिंग पहले कहाँ पे आई और राइटिंग स्क्रिप्ट और वो सब कहाँ पे आई, वो सब. So 6th question, what was the assumption about the origin of urban life in India before the Chiladic dig? उससे पहले क्या assumption था? And assumption is something that was assumed, not a fact, okay? Don't confuse it with a fact. The origins lay in the northern galactic plain, which urbanized earlier than the south. The Indus Valley civilization was the first. So this is a fact. So you do not have to mark this. This is totally a fact. Second urbanization was known to be in the Magad Empire. I think this is actually mentioned here, and this is also more or less a fact. Gangetic Plain and all that. After Indus Valley civilization, Magad Empire was very large. It almost covered entirety of India. Origins in the northern Gangetic, which are early in the south. So A is actually assumption, क्योंकि
पहले से ये डाउट था कि वही तो डाउट हो रहा है ना, किसने हमें सिखाया पढ़ना. तो Gangetic Plain was developed earlier, so it was assumed that Gangetic Plains literature or writing skill reached the southern part of India, or they migrated to the southern part of India. So A will be the answer in this case. Then let's go with the 7th question. The Killarney excavation further challenged the idea of a single fountain head of Indian life. Elaboration of this sentence, which of these options follow? Fountain head मतलब center of civilization कहाँ पे growth हुआ. जैसे टेक्नोलॉजिकली हम बोले कि डेमोक्रेसी कहाँ पे इवॉल्व हुआ सबसे पहले, तो ऑब्वियसली एंशिएंट इंडिया हैड सम पार्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, बट इट वाज नॉट टू प्रोफाउंड. ओवरऑल वी वर मोनार्की, बट डेमोक्रेटिक आइडियाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंग्लैंड एंड देयर वर डिफरेंट एक्ट्स एंड देयर वाज पार्लियामेंट्री सिस्टम. उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ऑल दैट. तो ऐसे फाउंटेन हेड कहाँ हुआ, ये मतलब डेवलपमेंट कहाँ हुई लिटरेचर की. Except further challenge the idea of, yeah. So before it was expected that a single fountainhead was present in Indus-sized civilization, then the central Gangetic Plains. Then it reached through them to the third part, which we call the Tamil or southern part of India. So first option, the dominant theories how urban and modern life came about in ancient India proved wrong by the Killarney archaeological dig. Modern life came about in ancient India. No, came about in ancient India. इंडिया एज ए होल, इसमें क्वेश्चन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का हो रहा है. तो एंशियंट इंडिया एज ए होल वी नो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही आया, लेकिन उसके बाद सेकंड वाली मतलब सेकंड जनरेशन ऑफ सिविलाइजेशन की क्वेश्चन हो रही थी, वो गैंगेटिक प्लेन से इसमें आया या फिर इधर से पहले से, मतलब किलाडी एक्सपीडिशन सेज दैट द डेवलपमेंट हैपन इंडिपेंडेंटली हियर इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सो एंशियंट इंडिया वी आर वेरी क्लियर इट वाज फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन इट स्प्रेड. So A will not be the answer, and this question is actually good because second question आप देखो इसमें, neither the Indus-sized civilization nor the ancient urban civilization Magadha clear explanation of urban life emerged in Killarney region of southern India in the 3rd century BC. This thing, if you confuse this thing, you are gonna get this answer wrong. बस यही एक स्टेटमेंट जो इस सेकेंड आंसर को रॉन्ग बनाती है, क्योंकि देखो इधर देखो, फर्स्ट द थिंकिंग वाज कि 3rd century BC इधर कहीं है, या इधर है 3rd century BC. The first assumption was कि 3rd BC में राइटिंग लिटरेचर रीच और सिविलाइजेशन रीच तमिलनाडु एंड किलाडी एरिया ऑफ इंडिया, पहली असम्पशन थी. लेकिन उसके बाद इधर क्या लिखा गया, 2600 ईयर्स पहले भी प्रेजेंट थी किलाडी में राइटिंग. सो दैट्स 6 BC. अगर इधर 6 BC होता तो ये करेक्ट हो जाता, बट इट्स 3 BC. आई थिंक यू गेटिंग द पॉइंट. इफ यू नॉट, इट्स एसेंशियली द पॉइंट कि यहाँ पे जो बाद में जो किलाडी एक्सप्लोरेशन के बाद में जो हमें पता चला, उससे पता चला अगर थॉट वाज कि 3 BC में लिटरेचर आया, उधर राइटिंग स्किल्स आई, लेकिन एक्चुअली वो 6 BC में ही थी. दैट्स व्हाट ए गाय फ्रॉम दैट रीजन टोल्ड. सो दैट इज ओनली रीजन वाई दिस ऑप्शन वेंट रॉन्ग. एंड इफ यू गॉट दिस आंसर रॉन्ग ड्यू टू you marked B and not C, then I would say it's a reasonable mistake because it might miss your eye and at first glance. And I hope you're doing the questions and then seeing the answers. But anyway, so C is the correct answer in this. The archaeological dig proved that Indian urban modern emerged independent several historical periods, geography, and no one theory is enough to explain it. Yeah, no one theory is enough to explain it because we know the starting point, but how it did it independently established in different regions, we don't have a clear theory right now for. So इसका आंसर सी है. 8. Language including a script similar to Brahmi scripts emerged in Killarney in the 6th century BC, which was, देखो इसमें 6th century BC बोला है इसमें. The following is the most convincing conclusion from this statement. Far superior, this is totally wrong. Illiterate could not. No, this is wrong. It's clearly written a potter, a farmer. Okay, a farmer could write. So people were not illiterate. A farmer could write or inscribe. So if we know it would significantly altered by the finding of the bananas achieved by Killarney civilization. This is actually the correct answer in this. Because discoveries can actually significantly alter the thinking you had before. And this is one example because you are not expecting that. And if you consider it a peasant was able to write or read and write as they have told, it's a big deal. That our literacy might have been far superior, but it's something, it's like, hey, कहने की बात है, आपको पता नहीं exactly, because history is just a bunch of lies accepted by a group of people, ऐसे बोलते हैं. So you can never be too sure, but C is the answer in this question.
BC इज एक्रोनिम फॉर, इसमें इफ़ यू डिडंट बिहाइंड क्राइस्ट एरा देन इट्स ओके, बी एंड सी तो टोटली रॉन्ग है, इसका आंसर ए है। BC इज़ डिफरेंट देन बिफोर क्राइस्ट एरा, BC होता है बिफोर क्राइस्ट, and the only reason why BC and BCE are wrote is BC is more secular and people are accepting it more, इसका आंसर ए है। एंड BC इज़ बिफोर क्राइस्ट जो सेकुलर नहीं है, वो क्रिश्चियनिटी के मतलब डोमिनेंस को दर्शाता है, जबकि डेट दोनों की सेम है, एक्चुअली डेट में कोई फ़र्क नहीं है। BC कैलेंडर एंड BCE कैलेंडर दोनों सेम माने जाते हैं। तो ये कॉमन नॉलेज क्वेश्चन था, आपको मतलब पता भी हो सकता है, पता भी नहीं हो सकता, बट बिफोर द कॉमन एरा इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस। एंड BC जो है वो बिहाइंड क्राइस्ट नहीं है, वो बिफोर क्राइस्ट है, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट मोर स्पेसिफिक। ए फार्मर कुड राइट हिज ओन नेम ऑन ए पॉट ही ओन, द फाइट गोइंग ऑन, लास्ट सेंटेंस। इन एगैलिटेरियन वन, इन एगैलिटेरियन मतलब मैंने सर को पिछले वीडियो में बताया था, एगैलिटेरियन का मतलब इक्वालिटी और एक अच्छी वर्ड। दैट डिड नॉट कंसर्व द एजुकेशन ओनली फॉर द एलाइट, यार ये करेक्ट है, सिर्फ एलाइट के लिए एजुकेशन नहीं थी। अगर इस स्टेटमेंट को हम एक्सेप्ट करें एंड इट इज़ प्रूव्ड करेक्ट देन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सी कहीं से भी नहीं आ रहा तो बी है इसका आंसर। उसके अलावा थर्ड पैसेज यू कैन रीड इट फास्ट, इट्स एक्सट्रैक्टेड विथ फ्रॉम ट्रिक मिरर रिफ्लेक्शन ऑन सेल्फ डिसीजन बाय G. Talented रैंडम हाउस 2019। So I guess you have read it. Which of the following statement can be inferred from the above passage? Internet expanded very slowly. Internet can be used to calm harm. Internet is addictive. Main purpose social media people showing off. No. इसमें इंटरनेट की बात हो रही है एक्चुअली। हाउ द ऑथर इज सेइंग बिफोर ही वाज, इंटरनेट जब ग्रो नहीं हुआ था उस टाइम कैसा था इंटरनेट, उसके बाद कैसे वो बन गया, एंड पीपल आर मतलब अपने परफेक्ट सेल्फ दिखा रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस दिखा रहे हैं, एंड इट बिकेम ए मोर मीडियम। उसकी ग्रोथ एंड पीपल की परसेप्शन जो उसमें चेंज हुए मतलब ओवरऑल, उसकी स्लो ग्रोथ के बारे में भी बताया गया। एंड इसमें देखो ग्रेटेस्ट पोटेंशियल ले इन द रेलम ऑफ मिस यूज, सो इसमें इंटरप्रिटेशन इसका आंसर है। इंटरनेट कैन बी यूज टू कॉज हार्म, इन्फर्ड बताया। ग्रेटेस्ट पोटेंशियल ऑफ इंटरनेट इज इन इट्स मिस यूज बिकॉज यू आर एनोनिमस एसेंशियली, आपको कोई देख नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, कोई लॉस नहीं थे उस टाइम जब, ऑब्वियसली जब नया कोई सिस्टम बनेगा उसमें कोई लॉस नहीं होंगे, इट्स जंगल, वाइल्ड रूल। इंटरनेट लॉस भी बाद में आए कंट्री में जब बने IT एक्ट एंड ऑल दैट। ये इंडिया का है मुझे नहीं पता, बट डिपेंड्स। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर truisms except the internet has changed the way world works. A preference for Cadbury can reveal a lot about your personality. And like with any tool, research has both advantage and only time can tell what future holds. B is the correct answer. Truism मतलब truism सही हो सकती है, सच हो सकती है, और एलिमिनेट करके आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब B का तो कोई बात ही नहीं हुई वैसे, इसमें भी है। इंटरनेट, yeah that's true, internet change the way the world works, like with any tool digital technology, इसमें मिसयूज़ की बात की है, only time can tell what the future holds, yes. Then which of the following comes closest to the underlined sentence in the passage? तो underlined sentence क्या है इसमें? It's as if we have been placed on a lookout that oversees the entire world and given a pair of binoculars that make everything look like our own reflection. So the world is very big और हमें एक बाइनोकुलर दे रखे हैं, जो हम देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। इसका अगर छोटे शब्दों में बताऊँ तो the way we use the internet says a lot about who we are. It's vague, it's not like वो नहीं है कि who we are. There's a big world, पूरी दुनिया देख पा रहे हैं, लेकिन हम बाइनोकुलर से कुछ बेटर ऑप्शन होगा इसमें। The internet reduces the distant people living across the world. That's true, but it's not what it is saying. The internet has the ability to customize what we access based on identity. That's correct, because internet is too big, we can customize what we want to see by our binoculars. जो देखना है आप देखो. The internet only shows us what we don't want to see. That's totally wrong. You can get it wrong, this question wrong, 13-1 I would say, but it will only be because if you did not read the other options, and that is a common mistake you can make. Not reading the other options, just thinking कि पहला ऑप्शन दे दिया सही है। सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से, आपको मतलब ऑप्शन देख रहे हो तो, क्योंकि if A is correct there is a chance B can be even more correct. Like you don't have to choose the correct answer, you have to choose the most correct answer or the least wrong answer. Most correct or least wrong answer. So that you have to keep in mind. Least wrong will be the best answer, क्योंकि कई बार सभी wrong है लेकिन least wrong क्या है. This is the best way to go with it. And which of the following is a metaphor? तो metaphor वो होता है जो उधर फिट नहीं बैठता, मतलब जैसे you're open ऐसे बुक, मैं बुक थोड़ी हूँ, मैं ओपन कैसे हूँ, तो it's not fitting correctly, मुहावरे टाइप कह सकते हैं कैसे. It's a poetic device. If you have done it in school then it will be easy for you. The village of the internet, जैसे village, internet का village थोड़ी होता है, तो it's a metaphor.
द फेवरिस इलेक्ट्रिक अनलिवेबल हेल, इसमें वोकेबलरी का यूज़ है. फेवरिस मतलब एनर्जेटिक होता है और मतलब थोड़ा मज़ेदार और पॉजिटिव वर्ड है. इलेक्ट्रिक अनलिवेबल हेल, अनलिवेबल मतलब हेल, मतलब हेल कैसे बहुत अच्छा और मज़ेदार हो सकता है, तो ये भी मेटाफोर है. तो ऑल ऑफ द हॉबीज का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन. देखते थ्री रिंग सर्कस. थ्री रिंग सर्कस एक्चुअली इंग्लिश में केओस को दिखाया जाता है. एक मतलब नेगेटिव ओपिनियन है, केओस मतलब एक बुरी सिचुएशन दिखाई जाती है. उसके बाद हैप्पीनेस एंड पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस, तो इट्स अ पॉजिटिव नेगेटिव, वही हो गया पैराडॉक्स, मेटाफोर है. तो ऑल ऑफ द वर्ब विल बी मेटाफोर इन दिस कंडीशन. So last, which of the following characteristics best describe this piece of writing? Is it fiction? Definitely not, because it's present. We know we are using internet. You're using internet to see this. So internet is not fiction. This is not poem for sure. Academic paper? Not really. He's telling his experience. तो उसे academic paper नहीं बोल सकते ना. So it's a non-fiction essay. वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, अपनी सिचुएशन बता रहा है और उसे क्या लगता है वो बता रहा है. इट्स नॉट academic paper used for studying academics. So let's go with the fourth passage. Okay, let's start. Hopefully you've read it. So with that, some at the mercy of water mafia. So it's related to something water mafia. वाटर की चोरी हो रही है लीगली बाय अमन शेट्टी. फॉरेन पॉलिसी, तो इंडिया की सिचुएशन है ये. और फॉरेन पॉलिसी का क्या यूज़ होगा वाटर माफिया, बट लेट्स सी व्हाट इट इज़. यमुना रिवर दिल्ली के आसपास, नॉर्थ गंगेटिक प्लेन्स, गंगा यमुना ऐसी सेट. उसके अलावा so let's start. Which of the following can be inferred from the passage? And one more thing, sometimes inferences can be directly written too. मतलब कुछ लोगों को डाउट होता है कि इन्फरेंसेस पैसेज में डायरेक्टली रिटर्न है तो इन्फरेंस नहीं होगा वो, लेकिन एक्चुअली इन्फरेंस डायरेक्टली रिटर्न भी हो सकता है पैसेज में. ज़रूरी नहीं है कि वो ना ही लिखा हो. सो अगर आपको ऐसे लगे कि सारे ऑप्शन गलत है या फिर 3 ऑप्शन गलत है और एक ऑप्शन है जो पहले से लिखा हुआ है उसमें, तो उसे आप करेक्ट करो. इन्फरेंस डायरेक्टली लिखा हो सकता है लाइन्स में. सो वाटर टैंकर्स माफिया ऑपरेट थ्रू लीगल आर जस्टिफाइड गिवन द नो, इट्स नॉट जस्टिफाइड ऑल. द वाटर सप्लाई वाटर टैंकर माफिया इज पोटेंशियली कंटामिनेटेड. या I think that will be the correct answer. Private owners play the most important, no, not most important role. They're just transporting it. Other people are also playing the role. Water supplied by the water tank mafia is meant primarily for residential use. This is wrong क्योंकि इसमें ऑफिस की भी बात की गई है मेरे हिसाब से. हाँ, होटल्स, मॉल्स, इन सर अपार्टमेंट्स, तो it's also used for business use. So B is potentially contaminated. The following used in the passage says that the illegal supply of groundnut is not recent phenomena. So this question I actually have a bit of a doubt. I would not say it's totally wrong आंसर की में जो दिया है, but let's see. यूबिक्यूटस का यूज़ इधर हुआ है और एंट्रेंस्ड का यूज़ इधर कहीं हुआ है. एंट्रेंस सिस्टम. यूबिक्यूटस इफ़ यू नो द मीनिंग मतलब वो सब जगह प्रेजेंट है. इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट. एंड एंट्रेंस मीन्स पहले से सिस्टम बैठा हुआ है, मतलब इट्स settled. So entrance would be a better answer, but ubiquitous is not wrong also. Both are very much similar in this case. But like teams like this are ubiquitous in Delhi. So that means illegal supply of ground butter is not recent phenomena, because एकदम से ubiquitous नहीं हो जाएगा ना. एकदम से you would not expect कि एकदम से सब जगह आ जाएगी एक चीज़. बट anyway the answer की मैं ये दिया है आंसर. अगर आपने B किया था तब भी I would say it was a close call in that regard. But A would be the correct answer in this केस. ए वुड बी बेटर आंसर देन बी. वही बात आ जाती है, लीस्ट रॉन्ग एंड मोस्ट करेक्ट. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सीम्स टू बी द ऑथर्स मेन कंसर्न इन द पैसेज. मेन कंसर्न क्या है ऑथर का? लेट्स सी क्या हो सकता है. दिल्लीज वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट एडिक्वेटली कैटर टू ऑल इट्स रेजिडेंट्स. कॉस्ट. हाँ, दिस इज लाइक फॉरेन पॉलिसी. आप इसमें टाइटल से आप देख सकते हो कि इसका कंसर्न क्या होगा. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी. सो हीज कंसर्न इज़ इंडिया, नॉट दिल्ली, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में बताया. बट इट्स नॉट डिपेंड कंपेयर, दैट इज़ लाइक टोटली लाइक नॉन रेलिवेंट कि कितने एक्टर्स एंड ऑल दैट इज़ नॉट हिज व्हाट वी से कंसर्न. द कंसर्न विल बी इंडिया कम्स एट द इमेंस कॉस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है. ही इज़ टॉकिंग अबाउट इंडिया, लाइक
इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी तो नेशन स्टेट की होगी ना. इट विल नॉट बी ऑफ दिल्ली और इट विल नॉट बी ऑफ ए लोकेलिटी, इट विल ऑफ द नेशन. सो इस टाइटल से आप निकाल सकते हो इसका आंसर. उसके बाद द फॉलोइंग साउंड्स यू कैन हियर द वाटर टैंकर्स आर फिल्ड. तो इसका आंसर मैं बताता हूँ. इसका आंसर दे रखा है शायद आंसर की में इसका क्या दे रखा है आंसर की में इसका डी दे रखा है आंसर, गशिंग. आंसर की में जो गलत है, क्योंकि इधर कहीं गशिंग है. Gushes through the hoses and into the trunk. So in this case gushing भी दे रखा है, तो इसका आंसर आई वुड नॉट से डी ही होना चाहिए. इसका आंसर ड्रोनिंग भी दे रखा है, थ्रमिंग और क्रीकिंग भी दे रखा है. ड्रोन इधर ड्रोन दे रखा है बट, और गशिंग भी दे रखा है इधर कहीं, और थ्रमिंग भी दे रखा है. तो इसका मैं आंसर आपको नहीं बता सकता कि क्या होगा. इसका आंसर आप पढ़ के बताना मुझे क्या हो सकता है. बट डी तो नहीं है क्योंकि गशिंग दे रखा है इसमें. तो दिस इज़ द क्वेश्चन आई कंसिडर कि थोड़ा रॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसे मैं इंक्लूड नहीं करूँगा. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट पैसेज से उठाया गया है, आपको देखना है वापस पढ़ने के कौन कौन सा साउंड है. उसके अलावा अगले क्वेश्चन में जाते हैं. विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स हिडन. तो दिस अगेन वोकैबुलरी वही बात है. कोवर्ट है इसका मतलब. कोवर्ट ऑपरेशन आपने रेगुलरली सुना होगा अगर आप देखते हो, तो कोवर्ट वही है, हिडन. आइडलिंग मतलब कुछ ना करना, इलिसिट मतलब इलीगल, सबवर्सिव मतलब सबवर्ट करना, किसी को शांत करना मतलब. इसके अलावा फिफ्थ पैसेज यू कैन रीड इट. इट्स फ्रॉम ड्रीमर्स हाउ यंग इंडियंस आर चेंजिंग द वर्ल्ड बाय सिंगिंग द पूनम पेंगुइन वाइकिंग 2018. So fully read it. It's about English and what is the opinion of Chetan Bhagat, a modern day writer and the author, and महात्मा गांधी का भी इसमें एक मेंशन है. So which are following informed by the authors shown English in contemporary India. The ability to speak Indian depends on place in English. not ये तो non-relevant. Papers में English divided along political science. non-relevant मतलब दिखाया ही नहीं है. आपको डाउट होगा तो ए और सी में ही होगा, क्योंकि इसमें कॉम्पिटेंस की बात की है. दे विल come across as incompetent even though they may be equally intelligent, creative or hardworking. But the better answer would be A in this case, because मतलब this is just a one single mention है, while ये पूरा मतलब पैसेज में ही दे रखा है, मतलब प्लेस एंड सोसाइटी का क्या इफेक्ट होता है और वो सब. तो उस वजह से A would be a better answer than C. C is just a small mention. Even though they may be equally intelligent, that is also a thing that equally intelligent बताया है. Competence, so does not imply competence, not more than intelligent or ऐसे. So in that regard A will be better question. But if you reach till the elimination till A and C, I would say that's good enough in this case, because this is a confusing option in that sense. But if you have any more like better explanation for this answer, you can write down in the comments. Among the following, defy Chetan Bhagat's neat categorization of Indian English speakers into E1 and E2. तो चेतन भगत ने डिवाइशन किया है E1 और E2 में. People who have parents who are speaking English and it's common for them to speak English and उनके लिए habitual है. और E2 are people who are not so habitual and अगर E1 के सामने इंटरव्यू बोर्ड में बैठेंगे तो उनको इनकम्पिटेंट वो सब फीलिंग होगी. और भी ज़्यादा कैटेगराइजेशन किया होगा पर इसमें लिखा नहीं है. सो सविता नवाब स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल मुंबई बिलोंग्स टू अपर मिडिल क्लास फैमिली. पब्लिक स्पीकिंग मेक्स एक्सट्रीम नर्वस. सो इन दिस केस दिस विल नॉट बी betraying the neat categorization, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग द प्रॉब्लम शी इज़ हैविंग इज थ्रू पब्लिक स्पीकिंग, नॉट ड्यू टू द इंग्लिश. इट्स डिफरेंट प्रॉब्लम है कि बात करने में ही दिक्कत है. सो मोइन वन से मिल्कमैन रांची लर्न्स इंग्लिश एज ऑफ 17 आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क कंसंट्रेशन. तो दिस विल बिट्रे द कैटेगराइजेशन, क्योंकि ये पर उसमें कैटेगराइजेशन में इसका ऑप्शन नहीं था. It to probably 10 times they eaten the technique family language, but if they sit in interview conduct, even they will come across even they may be creative or hardworking. So this is an exception to that. B will be the answer in this case, because he is in E2 category. His family is not that English speaking and all that, but he learned it and different situations में. और उसके बाद he became English instructor पढ़ाने वाला. तो इन दैट केस आप कंसिडर कर सकते हो कि ही रीच द इवन कैटेगरीज बिकॉज ही विल टीच स्टूडेंट्स इंग्लिश. दैट इज़ द असम्पशन मेड हियर. विच आर फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स रिस्पॉन्स टू भगत्स व्यूज ऑन इंग्लिश. द ऑथर डिसमिसेस हिज व्यूज एज सेल्फ अपॉइंटेड एक्सपर्ट. दिस इज टू एग्रेसिव. आई डोंट थिंक सो. द
The author completely agrees with these views. No. Neither agrees nor disagrees. No. A, D is the correct answer. Author has told that there are more other factors. Chetan Bhagat has made a very simple categorization based on their birth and no other variables present in that categorization. But the author is saying there are other variables like where you are born, south and caste, उसके अलावा वुमेन मैन एंड उसमें कैटेगराइजेशन और वेरिएबल्स आपको डालने पड़ेंगे. सो दैट इज़ द रीज़न. तो इसका आंसर डी है. उसके 24 विच आर द फॉलोइंग कैन बी इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम गांधीज व्यूज विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. सो गांधी इज मेंशन्ड somewhere here, yeah. Entry will be counter assessed as one of the greatest boys saying rightly in the present that without English they cannot get government services. So that is the word here. English should not be a subject in Indian universities. The professional writer not again enter into inferred बोला है इसमें. It's clearly written, but still it is inferred. Writing inferred. Blighting foreign medium upon the youth will be conscious on the greatest strategy. Our boys think and rightly will present that without. So इसमें we should be clear कि पहली बात not be taught as subject in Indian universities. ये इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात की है, जबकि गांधी अगर इसमें आंसर होना चाहिए था इंडियन एजुकेशन सिस्टम. बिकॉज इफ आई सी तो कंट्री विल कॉन्टेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉरेन मीडियम. सो फॉरेन मीडियम वो यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पूरे एजुकेशन से. अगर इसमें बोलते कि taught as सब्जेक्ट इन इंडिया, मतलब पूरे कंट्री के स्कूल्स एंड एजुकेशन हर तरह के एजुकेशन में सब्जेक्ट नहीं होता और मीडियम ना होता, दैट वुड बी ए बेटर. बट इसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी बोला है, इस वजह से गलत हो गया. तो वही बात है, पढ़ते पढ़ते सा इग्नोर कर दो, इंडियन यूनिवर्सिटी को इंडिया समझ लो या स्किप मैनुअली स्किप पढ़ लो. वैसे फर्स्ट वीडियो में बोलता आपको एक्टिवली पढ़ना है, तो वही इसमें आप मिस्टेक कर सकते हो. तो इसका आंसर बी है. और सी कैन गेट रिच, नो दे इट हेल्प्स देम इन मैरिज बट नॉट गेट रिच. सो बी इज द आंसर इन दिस केस. And the reason why A is wrong is this, and I think many of you would have marked A. So B is answering this one. So of the following pairs of words are synonymous. Again vocabulary. Vocabulary is something that you have to keep in mind because vocabulary can mess with you a lot because they are easy marks if you know the meaning actually. Except मतलब except भी एक word है, वो ignore नहीं करना कभी भी. अगर आपने पढ़ लिया और पहला देख लिया ये तो synonymous टिक कर दिया, नहीं, except भी पढ़ना है. Crusade campaign, sophisticated word, मतलब ये सी करेक्ट है, क्रॉसिंग करो, ठीक है. कोहेशन यूनिटी भी सिनोनिम है. सोफिस्टिकेटेड मीन्स वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी क्लीन एंड ऑल दैट, एंड स्पॉइल्ड इज ऑब्वियसली नॉट ऑपोजिट ऑफ दैट एज एंटोनिम्स. सो दिस इज लास्ट पैसेज, लेट्स गेट इट ओवर विथ. So now I think you got a very good idea की level difference in 2023 and 2024 paper. 2024 was very direct and easy, no vocabs and all that, no no questions which were very close in that regard. Okay, so let's start. So this is extracted from Harun and C of Stories, again novel fiction by Salman Rushdie, a very famous author, Grant and Penguin 1990. इसमें there's if and Harun. It's an imaginary world. I've not read this book, so I don't know much, but it's about imagination, and he's telling you should not put yourself in a position where your imaginations are stopped, and you should not only see what you're seeing and see more than what you're seeing. Essentially मतलब आँखों की जो दिख रही है वही सिर्फ सच नहीं होता, और भी चीज़ें होती है, and वो imaginative creatures भी से दिखाता है. Harun is the person who has reached there and he's totally confused, and obviously in the end he's also very excited and surprised. So if which of the following statement is true, if is right, you should only trust what you cannot see. This is extreme statement wrong, और ये दिया भी नहीं उसमें. Naming something is the only way to make it unreal. No, it's opposite. Real होना चाहिए था. You should only trust what you can see. No, इसका तो उसका opposite बोला है इसने. Is the only way to make it real. इसमें तुम बी टिक कर सकते हो अगर तुमने अनरियल को रियल पढ़ लिया. अदर देन दैट डी इज द आंसर. Which are following applies to if he speaks in contradiction? No, he has a habit of speaking in synonyms. This is actually correct क्योंकि आप continuously तो देखोगे. Pluck it out place, देखो, rescued from anonymity, to pluck it out of the place of namelessness, or sought to identify it.
और भी स्टेटमेंट्स आप देखोगे तो सिनोनिम से बात करता है. पहले जैसे बोलेगा कल, टुमारो, सो देयर सिनोनिम. और कल, टुमारो और आफ्टर टुडे, मतलब ऐसे, मतलब सिनोनिम में बात करना. एक चीज़ बता दी उसको बताना ये, तो समझ गए ना पॉइंट. तो इसका आंसर बी है. मेटाफोर नो कॉन्ट्रडिक्शन, power to express ideas. And the following most accurately describes what the underlined sentence means in the context of passage. Believe in your eyes and you will get into a lot of trouble. Hot water MS. Do not restrict it only to what you can physically see. Accept everything you see uncritically. ये तो एक्सट्रीम है और रॉन्ग है. ट्रस्टिंग योर सेंसेस इज इज रेसिपी फॉर सक्सेस. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नॉट स्टेटेड. लर्न नॉट टू अप्रिशिएट व्यू पॉइंट्स अदर देन योर ओन. इज द आंसर क्लियरली. मतलब इट्स ईजी वन, यू कैन एलिमिनेट इट. मतलब इसकी तो कोई बात ही नहीं की एक्चुअली. एंड डायरेक्टर ओनली टू व्हाट यू कैन फिजिकली सी. बिलीव इन योर ओन आइज एंड यू विल गेट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल. So do not restrict your knowledge only to what you can physically see. So next, all the words below are related in meaning except, and again vocabulary. So levitate, fly and hover. And gander is not. Gander means to take a quick look actually, and it also means male goose. तो obviously मेरे हिसाब से सभी से ही कर देंगे इसे. तो डी एक्सेप्ट दिया है. डोंट फॉरगेट एक्सेप्ट. एंड ये आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है अगर आप क्वेश्चन ढंग से ना पढ़ो तो. What does fabulous mean in the passage? Fabulous की तरह यूज़ हुआ है, fabulous. And as well as words there were fabulous ring creatures out of legends. Legends की बात की गई है. Very good. इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे हिसाब से नहीं होगा. Unbelievable, mythical, enormous और very good तो नहीं होगा. mythical भी हो सकता है क्योंकि लेजेंड की बात की गई है. तो इसका आंसर mythical ही है. Unbelievable नहीं है. Mythical, legend, only because there was legend, mythical is the correct word in this case. Mythical being creatures out of legends because like it's fiction and you don't expect. तो ये है सारे आंसर की के. And 19 was the question which I told you I will not include it because gushing दे रखा है उसमें. And questions which you can actually go wrong in, there are a couple of questions I would say. Out of these 13 questions, if you attempted all, I would say 20 would be a reasonable score. If not, 15 would also be reasonable. 25 would be very good. You should at least target 25, but even if you're getting 15, 20, you can reach there. The only reason you will get to 15 or 20 will be because of reasons like you missed the except word or you missed facts like महात्मा गांधी की जो बात हो रही थी इधर कि यूनिवर्सिटी का वर्ड था और 3rd BC. सो बहुत स्मॉल चेंजेस है ट्विक्स किए ऑप्शंस में, लेकिन वो आपके मतलब आपके तो वही मार्क्स जाएंगे. वो स्मॉल ट्विक्स करे बड़े ट्विक्स करे. इफ दे डू स्मॉल ट्विक्स इट विल बी मच हार्डर फॉर यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन द करेक्ट ऑप्शन एंड रॉन्ग ऑप्शन. सो व्हाट डिड वी लर्न कंपेयर टू दैट? स्मॉल ट्विक्स विल हैपन. स्मॉल ट्विक्स, बिग इफेक्ट्स. सो रीड इट केयरफुली. vocab is important, at least 5 marks तो vocab से is important. 5 marks were directly from vocab. अगर आपको vocab नहीं पता तो आपकी बैंड बच जाएगी. उसके अलावा डिफरेंस इन लेवल 2023 2024. 24 वाज डायरेक्ट. बहुत बड़े ट्विक्स किए, स्मॉल ट्विक्स किए नहीं उसमें. मतलब बड़े डिफरेंस थे ऑप्शंस में तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे. vocab का यूज़ किया नहीं. उसके अलावा कई वेरी क्लोज ऑप्शंस भी थे कई सारे, जिसमें आपका सब्जेक्टिव आंसर थोड़ा हो जाता है, मतलब क्लोज टू सब्जेक्टिव आई वुड से. बट ओवरऑल दैट्स हाउ इट वाज डन एंड दैट्स द लेवल यू हैव टू प्रैक्टिस इन. सो दिस इज़ आई गेस दिस इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर. उससे ज़्यादा कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है. फिक्शन भी आएगा, नॉन फिक्शन भी आएगा, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स एंड ऑप्शंस को केयरफुली रीड करना विल बी वेरी केयर. रीडिंग बिटवीन द लाइन्स जैसे बोलते हैं. एंड दिस इज़ vocab. यूबिक्यूटस जो इसमें दिया भी था, बीइंग एवरीवेयर एट वंस, ओमनीप्रेजेंट, पेडागोगी, ए वे ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग. गैंडर जो इसमें ऑप्शन में था, मतलब पैसेज में था. टेक ए क्विक लुक इसमें वो दिया था. ए मेल गुश को भी कहते हैं, जिसकी 2 मीनिंग्स है. फ्लावर कैस्ट फीलिंग ऑफ शोइंग इंटेंस शॉक एंड सरप्राइज. एंड दिस इज़ द मीनिंग. BC का एक क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया. एनो डोमिनो और बिफोर क्राइस्ट, ये दोनों पहले यूज़ होते थे, अभी भी यूज़ होते हैं,
लेकिन ये नॉन सेकुलर है क्योंकि क्रिश्चियनिटी को ऑब्वियसली क्राइस्ट तो एक फिगर है क्रिश्चियनिटी के. बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा आर मोर सेकुलर. सो टाइम में कोई बदलाव नहीं हुआ. बिफोर क्राइस्ट का और बिफोर कॉमन एरा का डेट सेम है, बस नाम बदल दिया गया है. सो दैट इज़ समथिंग. एंड उसके बाद एक कोट है सिंपल सी, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट डू हार्ड वर्क. एंड आई वुड इवन से कि आपकी इंटरप्रिटेशन डिपेंड करता है. यू कैन इंटरप्रेट इट एज कि टैलेंट भी हार्ड वर्क करेगा तो हम क्या करेंगे. आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो नेगेटिवली इसको, या फिर आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो हार्ड वर्क इज़ ऑल्सो ए टैलेंट. इफ यू कैन डू हार्ड वर्क दैट्स लाइक आई वुड से बेटर देन मोस्ट ऑफ द टैलेंट्स. उसके बाद दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो. काफ़ी थोड़ा मेरे हिसाब से मैंने जल्दी किया होगा कुछ चीज़ों को. एंड मैंने फर्स्ट वीडियो में आई यूज़ मोर इंग्लिश, सेकंड वीडियो में मोर हिंदी. इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ द लैंग्वेज आई वुड से दैट्स फाइन. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मेंशन दैट स्पीक इन इंग्लिश और स्पीक इन हिंदी. आई विल not minded and opinions are welcomed. And subscribe to LegaLift social handle. My Insta ID is Priyanshu, and all the best. Wish you luck. So PYQ are completed for 24 and 23. Now most probably we can go towards vocab, but let's see where it goes. And all the best. Wish you luck, and that's all.